हेलो दोस्तों, मैं एंट्रेंस पेपर्स के हवाले से आपके लिए एक और पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, ये पेपर बायो रिसोर्सेज का 2020 का पेपर है। दोस्तों, इसका 2021 का पेपर मैंने पहले ही डिस्कस किया है। वो पेपर आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। उसके अलावा वहां पर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस पेपर्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एंट्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट मिलेगा, उसी में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आपको पता है दोस्तों कि इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 60 मार्क्स होते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स होता है और उसके लिए आपको 70 मिनट्स दिए जाते हैं। एक और बात यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें 0.25 मार्क्स कट होता है हर एक रॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। यहाँ पर जो भी आंसर की हम डिस्कस करेंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ए पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, which of the following exemplifies the homologous organ? A part इसका आंसर है the arm of a human wing of a bird। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, in photosynthesis the first step is C part photo excitation of chlorophyll। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, the precursor for abscisic acid is सी पर इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मोस्ट प्रिसाइज फंक्शन ऑफ द फिलिफोरम apparatus? ए पर इसका आंसर है गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलपर्स इनटू। सी पर इसका आंसर है एम्ब्रियो सैक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, when the activity of one gene is suppressed by the activity of a non-allelic gene, it is known as। सी पर इसका आंसर है एपिस्टेसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, which term represents a pair of contrasting characters? डी पर इसका आंसर है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर यानी H2O इज। बी पर इसका आंसर है 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सपेरिमेंट दैट सिमुलेटेड कंडीशंस thought to be present on the early earth for understanding the evolution of life is। सी पर इसका आंसर है मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, हिस्टोन्स द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ chromatin represent a family of B part positively charged proteins। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सी पर इसका आंसर है वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू। डी पर इसका आंसर है इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन बट नॉट अफेक्टिंग द रिएक्शन इक्विलिब्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, the interactions among lipids and between lipids and proteins in a fluid mosaic membrane are। बी पर इसका आंसर है नॉन कोवेलेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इंट्रॉन्स आर सेगमेंट ऑफ DNA that डी पार्ट आर इंसर्टेड बिटवीन एक्सप्रेस्ड जीन्स। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर, एंटीबॉडीज आर डी पार्ट सीरम proteins that protect the body। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, which of the following blood group antigens is not determined by carbohydrate epitope? डी पर इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे, the most important reason why a vaccine against AIDS is exceedingly difficult to produce is that the virus सी पार्ट shows antigen variation। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, the phase of the cell cycle immediately preceding mitosis is called सी पार्ट G2 phase। 20 question, protein molecules that differ in a few amino acid residues are called A part isoforms। चलेंगे 21 पर,
The primary structure of a protein refers to its D part amino acid sequence. उसके बाद 22 question. Which of the following statements is correct? A part, oxygen is more negative than hydrogen, hence oxygen atoms attract the electrons more strongly. उसके बाद 23rd question. A chemical reaction will proceed in the forward direction only when the free energy change of the reaction is C part negative. 24th question. The monoclonal antibodies with catalytic activity are called A part enzymes. 25 question. A low Km value indicates D part strong enzyme substrate binding. चलेंगे 26 क्वेश्चन पर. Which of the following pigments does not have oxygen in its molecule? C part carotene. 27 question. In photorespiration, the molecule that is oxidized in mitochondria to release carbon dioxide is A part. इसका सही आंसर है. 28 question. The enzymes of glycolysis are present in answer D part है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following is not a termination codon in the universal genetic code? A part AUG. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30. Radioisotope containing molecules are employed in B part. इसका आंसर है ऑटो रेडियोग्राफी. उसके बाद चलेंगे 31 क्वेश्चन पर. Arrangement of atoms and molecular groups in nucleic acid can be best studied through आंसर डी पर है एक्सरे डिफ्रैक्शन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32. In which of the following processes molybdenum has an important role? A part nitrogen fixation. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33. The cell at zero turgor pressure shows C part limiting plasmolysis. 34th question. Function of ACTH is a C part stimulate the adrenal cortex to produce hormones. उसके बाद 35 question. Which of the two hormones are secreted by posterior lobe of pituitary gland? आंसर C part है. उसके बाद चलेंगे 36 क्वेश्चन पर. Division in which the egg divides completely is known as A part holoblastic. उसके बाद 37 question. The type of cleavage in an egg is determined by A part amount and distribution of yolk. 38. Pleiotrophic gene has D part multiple phenotypes. 39 question. A cross between homozygous recessive and heterozygous plant is C part test cross. Question number 40. When both alleles express their effect on being present together, the phenomenon is called C part pseudodominance. उसके बाद question number 41. A chromosome with subterminal centromere is B part. इसका आंसर है acrocentric. चलेंगे 42 पर. Which of the following is the principal cereal of Tropicus and was introduced from Old World into New World? आंसर C part है इसका rice. 43 question. Opium is obtained from D part. 44 question. The National Botanical Research Institute is located in B part. इसका आंसर है लखनऊ. उसके बाद 45 question. Worker bees are D part sterile females. 46. Silkworm larva spines a silk. B part from outside to inside. चलेंगे 47 पर. Which of the following is a well-known greenhouse gas? A part N2O. 48. The interaction in which one species is harmed and the other is unaffected is called A part aminalism.
49 question. Which of the following is the best example of a perfect nutrient cycle? C part carbon cycle. उसके बाद question number 50. Which of the following statement is true? B part detritus-based food chains are dominant in terrestrial ecosystems while the grazing ones are so in aquatic ecosystems. उसके बाद चलेंगे question number 51 पर. The primary criteria for designation of biodiversity hotspots is D part species, endemism, and degree of habitat degradation. उसके बाद 52 question. Which of the following is not a strategy for ecosystem conservation? B part biosphere reserve. 53 question. The gene incorporated in the genetically modified golden rice is primarily meant for the biosynthesis of C part vitamin A. 54 question. The single specimen designated as a type of a species by the original author at the time the species name and description was published is D part holotype. 55 question. The technique used to make a huge number of copies of a specific DNA segment is B part polymerase chain reaction. चलेंगे 56 question पर. Chipko movement was launched for the protection of B part forests. 57. Which of the following contributors to a species to be invasive? D part all of the above. यानी ये सारे इसमें शामिल है. इनको हम एक बार रेट करते हैं. Release from native enemies, use of allelochemicals as novel weapons, increased competitive ability in new ranges. उसके बाद 58 question. Biomagnification of DDT results in a decline in bird population by D part all of the above. Thinning of eggshells, CA metabolism disturbance, premature breaking of eggshells. उसके बाद चलेंगे 59 question पर. According to Vavilov, the origin of cultivated wheat is D part ancient Mediterranean including Southwest Asia. उसके बाद question number 60. Trisomy 18 results in A part Edwards syndrome. दोस्तों ये था बायोरिसोर्स का 2020 पेपर. आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही. थैंक यू.